नमस्कार दोस्तों। आज मैं काफ़ी समय के बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करना चाहेंगे। हमारे साथ आज प्लांट एंड फूड रिसर्च सेंटर न्यूजीलैंड से दो बड़े महत्वपूर्ण विशेषज्ञ, हॉर्टिकल्चर के ऊपर जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर जैक हैं, बाईं तरफ मिस्टर डेविड हैं। ये दोनों हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक फंडेड हिमाचल प्रदेश में जिसका कार्यान्वयन हो रहा है उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। तो इनसे मैंने चर्चा की थी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में और इसमें खासकर क्या परेशानियां लोगों को आ रही हैं और किस तरह की प्रोग्रेस चल रही है उसके बारे में इनसे चर्चा की थी। तो आज मैं इनसे चाहूँगा कि ये हमारे कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर ये अपना रिस्पांस दें और हमारे जो सहायता करें ताकि ग्रोअर्स जो हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं और ख़ासकर सेब के जो उत्पादक हैं उनको अपनी ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में सहायता मिल सके। I welcome Mr. Jack from and Mr. David from the Food and Plant Research, New Zealand, and I hope your stay has been very good, excellent, and I hope you're enjoying your stay in Himachal. As discussed with you earlier, we have this one issue which is coming up here in Himachal, that should we go in for the high density orchards using the seedling based plants? Is it a good idea? Because some farmers or some nurserymen in Himachal are promoting this concept, and a lot of people in my own home district, Chamba, which is one of the most backward districts in the country, they are adopting to it and they are buying these plants from these nurserymen. And this has been there for about a year or two. The practice has been there, but we have not seen the long-term benefits or long-term effects of this new practice. So, but the project, the World Bank funded project, and the practice all over the world, as you know, is on clonally propagated rootstocks. So, could you please just clarify this for the benefit that whether it's a good idea to go for seedling-based rootstock, and if not, what are the reasons? What is the science behind it? Sure. Yeah. Well, we don't think it's a good idea. We think it's a very risky idea. And I think there's two main reasons. One is the physiology of the plant, and the other one is the economics. Okay. So yeah, I can go into that in a little more detail, of Yes, course. please. Yes, please. Yeah. So, well, in terms of the physiology of the plant, and as you said, there's no country in the world with modern growing systems that grow trees on seedling rootstock. Okay. Everybody uses clonal rootstock for good reasons, because the trees are productive, they're resistant to many pests and disease, and the clonal rootstock is genetically moderating, controlling the vigor of the plant and the fruiting of the plant. So really, of course, that's why we should go for clonal rootstock. I think the very idea of going in for high density plantation on clonally propagated rootstocks was to basically for three reasons. One, for ensuring regular crop every year. Yes. Number two, for a much lesser gestation period between plantation and the production. Yes. And number three, very easy management of the orchard, so Yes. that anybody can manage the orchard. You don't need real big experts to manage the orchard. Yes. And another reason was for going for a very high productivity and production, of course. Yes. So, do you think, and this is the problem with the seedling rootstocks in the orchards in Himachal Pradesh and rest of the country, the crop set, the fruit set was not happening on a regular basis. Yes. So, do you think the seedling based plant will have this danger even if we go in for high density, the way some people are trying to propagate it among the farmers? Yes, I think so. And the reason is that a seedling is a vigorous plant, and it's not providing or conferring any precocity or fruitfulness to the sign variety. So sure, you can do a lot of intervention, winter and summer pruning, and with summer pruning, if you keep doing it every year, and maybe has to be many times per year, you can induce the plant to flower
But the question is whether the fruit will set. Set or not. Because, and again, the physiology behind this is that in the early part of the season when the tree comes into leaf, and when you have a vigorous root system, the shoots take preference and they take all the energy available as the leaf area develops. And in that case, the fruit is very likely to fall off or upsize. And so while you can induce flowering with repeated summer pruning to contain a tree in a space, the likelihood of getting regular crops every year is very uncertain. Very uncertain. Thank you for that. I think what we have observed in Himachal Pradesh is that whenever there is the temperature variation or some change in the climate while the flower is there during the flower season, the seedling-based root plants tend to abort the fruit set. Yes. That has been happening. Yes. That is the reason why we have this World Bank funded horticulture development project Yes. for going in for high density plantation. And also that is the reason why we have this variation in production. So if you go through the 10 years or 15 years data of fruit production in Himachal Pradesh, you'll find a huge variation. For example, in 1 year maybe there's 600,000 tons of apples, and maybe next year it is 400,000 tons. So and another year maybe it is 150,000 tons. So Yes. it is a very uncertain kind of productivity cycle. Yes. So I think, do you agree with this, that with high density seedling plants, this is going to continue? There is an inherent risk with Yes. seedling plants that the trees will go into biennial production, and far lower risk with clonal rootstocks. Another point about clonal rootstocks is that you can select a rootstock which is appropriate for the site and for the vigor of the site, the health, soil health. You can't do that with seedling. So seedling is variable from tree to tree because they are seeds. Clonal rootstocks, you choose the type that matches the site, and then you can maximize the production potential of the site. थैंक यू वेरी मच. सो इसको थोड़ा सा मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ सभी किसान भाइयों के लिए. इनका कहना यही है कि जो ट्रेंड सीडलिंग रूट स्टॉक पे, जो पौधे हमारे बीज पर आधारित पौधे हैं, उन पे जो ट्रेंड प्रोडक्टिविटी का या प्रोडक्शन का है, वो इस प्रैक्टिस में भी, हाई डेंसिटी में भी कंटिन्यू करने की ही चांसेस हैं. कारण उसका ये है कि एक तो जैसे डेविड ने कहा कि क्लोनली प्रोपोगेटेड रूट स्टॉक पे आप मैच कर सकते हैं कि रूट स्टॉक कौन सा होगा और उसके ऊपर साइनवुड कौन सी होगी, कौन सा विग्रस है, कौन सा नॉन विग्रस है, और कौन सा उसके ऊपर सूट करता है. सीडलिंग पे ऊपर क्योंकि सीड पे आधारित है, आपके पास कोई उसकी वैरायटी का पता नहीं, आपको उसका कोई श्योरिटी नहीं है कि किस कैरेक्टर का वो सीड है, तो उस पर ये सर्टेनिटी नहीं है कि कौन सा वाला साइनवुड सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा. और दूसरा इनका ये भी कहना है कि ये बात सही है कि प्रोडक्शन जो है, जो पैदावार होगी, वो गारंटी नहीं है कि हमेशा हर साल ही होगी. जो वेरिएशन, क्लाइमेटिक वेरिएशन की वजह से सीडलिंग बेस्ड आधारित जो पौधे हैं, उनमें जो वेरिएशन आती है पीछे जैसे देखा गया पिछले 10-15 साल का डेटा अगर आप उठाएं, किसी वक्त 1 करोड़ पेटियां होती थी हिमाचल में, कभी 2 करोड़ हो जाती हैं, कभी 3 करोड़ हो जाती हैं, कभी 50 लाख हो जाती हैं. तो ये रेगुलर क्रॉप जो है हिमाचल प्रदेश में सेब की नहीं होती थी. इसी कारण से कई हमारे किसान भाइयों ने ये सेब का काम छोड़ दिया था, और ख़ासकर लोअर हाइट पे और मिडिल हाइट पे सेब का प्रोडक्शन होना बिल्कुल बंद हो गया था. लेकिन अब और अगर ये हाई डेंसिटी पे करेंगे तो इनका कहना ये दोनों साइंटिस्ट का इनकी है कि वही वाली समस्याएं जो हैं जारी रह सकती हैं. और दूसरा ये है कि इसको मैनेज करना किसानों के लिए बहुत मुश्किल है, और इसकी कोई ऐसी एम्पिरिकल स्टडीज़ भी नहीं है, ऐसे कोई हमारे पास रिसर्च पेपर भी नहीं है जो उसको सिद्ध कर सके कि एक रेगुलर क्रॉप देने वाला सिस्टम हो पाएगा. तो मेरे ख्याल से सभी से मेरा अनुरोध रहेगा हिमाचल प्रदेश में सभी किसानों से, खासकर चंबा में जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जिसको हम इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कई पंचायतों में देखा, कई ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के माध्यम से कुछ पंचायतें प्लांट मटेरियल ले रही हैं और वो किसानों के खेतों में ऑर्चर्ड लगाने का काम कर रही हैं, लेकिन वो सीडलिंग पर आधारित पौधों को वहाँ सप्लाई कर रही हैं, जो कि बहुत ही एक ख़तरनाक ट्रेंड मेरे हिसाब से साबित होगा किसानों के लिए, क्योंकि उनकी ज़मीन तो ऑक्युपाई हो जाएगी, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन जो है, उसकी पैदावार जो है सेब की, वो इंश्योर नहीं की जाएगी, और किसानों को फिर कुछ समय के बाद 4, 5, 7 साल के बाद जब
वही समस्या आनी शुरू होंगी पहले जो ऑर्चिड्स में हैं, तो वो समस्या दोबारा आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर शायद उनको अप्रूव करना पड़ेगा, तब तक बहुत पैसा उनका लग गया होगा, तब तक काफ़ी देर हो गई, उनका काफ़ी समय बर्बाद हो रहा है। एनी अदर सजेशन यू वुड? या Shall I talk a little about economics? प्लीज प्लीज। Sure. So the other reason, apart from the physiological reasons for not desiring seedling rootstock, particularly on an intensive planting, is it makes absolutely no economic sense to do so. Yeah. So we understand that some of the recommendations for trying to grow intensive orchards on seedling rootstock is to plant metre by metre squares. That is over 10,000 trees per hectare. So the cost of those trees, if you buy grafted seedling at 100 rupees, even 100 rupees is more than 10,000 rupees per hectare. So 10,000 trees times 100 rupees is in 1 lakh per hectare. If you were doing the equivalent orchard planting with M111 rootstock, we would recommend 3 metres by 2 metres. Yeah. So about 2,500 to 3,000 trees per hectare. The cost of a bought clonal rootstock plant, grafted, grown, ready to grow, is less per hectare with M111 at sensible spacings than clonal rootstock at silly intensive spacings. Yeah, that's right. But if you have to buy these plants, well, the cost is important. But here, in the practice which is being followed in some remote areas in the state, is that the plant material is being funded by the government through a scheme called Manrega. Under that, the panchayats are just buying those plant materials and supplying to the farmers. They are only digging pits for them at their own cost. Rest of the plant material being supplied at no cost. It is still economically risky because the trees are likely to fail to produce the equivalent crop of the clonal rootstock trees, especially over a long period of time. We can't imagine anybody being able to manage an intensive seedling rootstock orchard for 10, 20, 30, 40 years. You will be growing an apple forest, and at some point you will have to cut out trees to allow them some space to grow. Much better to grow a sensible orchard at a sensible spacing using clonal rootstock and have that orchard in production from year 3 or 4 from planting for another 30 or 40 years. That's true. इनका यही कहना है कि हाई डेंसिटी सीडलिंग बेस्ड ऑर्चर्ड जो है वो 4-5 साल के बाद बिल्कुल मिसमैनेजेबल हो जाएगा। उसको मैनेज करना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि 10,000 पौधे अगर एक हेक्टेयर में आप लगाते हैं, और वो भी सीडलिंग बेस्ड रूटस्टॉक के, जो कि एक बहुत बड़ा विग्रस प्लांट है, बहुत बड़े पौधे होते हैं अगर आप उनको इंडिपेंडेंटली लगाते हैं, तो एक जंगल बन जाएगा बगीचा, वो बगीचा नहीं रहेगा। तो उसको बीमारियों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और प्रोडक्टिविटी, जब उसकी प्रोडक्शन ही नहीं आएगी तो कोई उसका मतलब नहीं बनता कि उसको उस ऑर्चर्ड को लगाया जाए। तो आप एक जंगल पैदा कर रहे हैं, आप एक ऑर्चर्ड नहीं पैदा कर रहे हैं। और इससे बेहतर यही है कि क्लोनली प्रोपगेटेड रूट स्टॉक लगाया जाए, एक सेंसिबल ऑर्चर्ड लगाया जाए जिसमें रेगुलर क्रॉप आए और क्वालिटी क्रॉप आए, जो कि अच्छी क्वालिटी का सेब लोगों को मुहैया हो और हर साल उसमें प्रोडक्शन हो, ताकि लोगों का और किसानों का इंटरेस्ट उसमें बने, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि डिपार्टमेंट से भी, यूनिवर्सिटी से भी और गवर्नमेंट के अधिकारियों से भी कि काइंडली इसमें इंटरवीन किया जाए, और जहाँ जहाँ भी ये प्रैक्टिस की जा रही है कि सीडलिंग बेस्ड रूट स्टॉक मनरेगा के थ्रू या किसी और अन्य स्कीम के थ्रू किसानों का, इवन अगर आप मुफ्त में भी दे रहे हैं तो भी एक बहुत गलत बात है, क्योंकि ये प्रैक्टिस दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में पूरे वर्ल्ड ओवर जहाँ जहाँ भी अच्छी ऑर्चर्डिंग हो रही है, जहाँ सेब के पौधे लगाए, सारे क्लोनली प्रोपगेटेड रूट स्टॉक पे हैं, क्योंकि क्वालिटी, और ख़ासकर जब आप हिंदुस्तान में सेब बाहर से इंपोर्ट हो रहा, आपको बाकी देशों के साथ कम्पीट करना है, क्वालिटी में कम्पीट करना है, प्रोडक्शन में कम्पीट करना है। तो इस परिस्थिति में हम इस गलती को हम न दोहराएं जो हम पिछले 50 साल से कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने एनी अदर क्लैरिफिकेशन? Just a little history. Back in the 1980s, the Israelis proposed a growing system called Meadow Orchards, which is remarkably like what is being proposed here with the high-density seedling trees. And there are no meadow orchards in the world anymore because they didn't work. They didn't work. They didn't last. They didn't last. Okay. Yeah, and I think it's quite likely that the people advocating this system will say, well, it failed because the farmers didn't do it properly, they didn't understand, they'll blame the farmer. But I think really it's just a bad idea, and it's really risky, and hopefully not too many people will risk their livelihood in following this idea.
थैंक यू जय। डेविड साहब का कहना ये है कि इज़राइल में भी कुछ समय पहले ये ट्राई किया गया था, उसमें एक प्रोजेक्ट था उनका मीडो ऑर्चर्ड्स, तो वो कहते हैं वो ट्रायल उनका सफल नहीं हुआ और उसकी वजह से आज मीडो ऑर्चर्ड कहीं भी दुनिया में नहीं देखे पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये था कि वो एक प्रयास जो था उनका वो सफल नहीं हुआ और ये एक बिल्कुल ही ख़राब आइडिया है, ख़राब ही विचार है कि सीडलिंग बेस्ड प्लांट्स के ऊपर हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड रेट किया जाए। और जैक साहब का भी यही कहना है कि ये फिजियोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है और किसानों को एक बहुत बड़े रिस्क की तरफ हम ले जा रहे हैं, क्योंकि 4-5 साल के बाद, क्योंकि अभी तो वो नर्सरी वाले कह रहे हैं कि साहब हमने जो उनको प्रैक्टिस बताई थी वो उन्होंने की नहीं, इसलिए इनके यहाँ फ्रूट नहीं आ रहे, ऑर्चर्ड सफल नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये सफल होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो पौधे 1 हेक्टेयर में 300-325 के करीब लगते हैं, वो अगर आप 10,000 लगा दें, आप वैसे ही सोच सकते हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है। एक जंगल है, ना कि ऑर्चर्ड है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी से और गवर्नमेंट से भी कि इस प्रैक्टिस को बंद कराया जाए तुरंत प्रभावी रूप से और किसानों को आने वाले रिस्क से बचाया जाए। और किसान भाइयों से भी मेरी प्रार्थना है कि वो क्लोनल प्रोपेगेटेड रूट स्टॉक पर ही ऑर्चर्ड रेयर करें और ऑर्चर्ड लगाएं और भविष्य में एक अच्छी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और अच्छी क्वालिटी का सेब और अन्य फल पैदा करें और आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं अपने मित्रों का जो इतने दूर न्यूजीलैंड से आए हैं यहाँ पे, मिस्टर डेविड और मिस्टर जैक का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने समय निकाला और हमसे इस बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की और एक बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए आज इस इंटरव्यू के माध्यम से इन्होंने दी है। थैंक यू वेरी मच डेविड एंड थैंक यू वेरी मच जैक। थैंक यू वेरी मच।